अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 44th लेक्चर में हो रही है। Now before we start our today's topic, I would like to go back because the previous lecture is connected with today's lecture. Our today's lecture is based on our previous discussion. So in the previous lecture, we basically started talking about the aggregate supply curve. But उससे पहले we were talking about the quantity theory of money और उसमें we were developing a relationship between money growth and inflation. And the relationship we got after our entire discussion based on the quantity theory of money, exchange equation, we got the net result that if we assume in the short run the velocity is held constant and the real GNP does not change in the short run, then what we see is the money growth and inflation relationship. But this relationship, if we just simply say that velocity is the number of times one unit, currency unit, is used for transaction purposes, and that normally remains stable. And for the GNP growth rate, again we can make that assumption, and then we see that money growth and inflation, they are directly related. But when we look at the inflation and the monetary policy and the money growth, what we see is that supply side held constant, which means no change in the potential output. Over a short period of time, we do not experience very quick changes in inflation. Rather, over a longer period of time, we can see inflation and money growth relationship. And then we try to relate inflation with the aggregate demand. And the aggregate demand, we said, is a downward sloping curve when we take inflation on y-axis and when we take output on x-axis. And there we say that aggregate demand basically has four basic components. We have consumption, investments, government expenditure, and the net export. And furthermore, we can also divide our aggregate demand components into two categories. One is the interest sensitive category and the other is non-interest sensitive category. They are not sensitive to the interest rate changes. And rather, practically speaking, we said कि हमारे जो consumption, investments and the net exports के decisions होते हैं, they are made keeping an eye on the real interest rate. और हमारा nominal and the real interest rate, they are also correlated. And normally, they move in the same direction. And we are going to see a relationship between inflation and the output. But when we are talking about a change in the non-interest sensitive component, for example, the government expenditure, then what is going to happen is that our aggregate demand curve is going to shift upward or the downward. So the shifting of the aggregate demand curve is due to the components of aggregate demand curve which are not sensitive to the interest rate changes. But so far we were only focusing on the aggregate demand side. But if we have to talk about the determination of output in an economy, then definitely we need to look at the price and production decisions. So in order to analyze the price and the production decision, we need to focus on the supply side. So when we started talking about the supply side, we said we should be analyzing our supply side in terms of the short run as well as the long run.
The short run aggregate supply curve determines the current output level and the inflation level. But when we have the downward sloping aggregate demand curve, in other words, our short run aggregate supply curve tells us that at what point on the aggregate demand curve we will be having our equilibrium level of output as well as the inflation. And then we started talking about the derivation of the aggregate supply curve. Before the derivation, we said the phenomenon of inflation has two characteristics. And those two characteristics are known as the inflation persistence. If we look around and we see, if inflation is high, it remains high for some time, for a couple of months. If it is low, then it remains low for a couple of months. So over a short period of time, inflation more or less remains stable. Number two, when we talk about the change in the inflation, then that inflation adjustment is a slow process. Increase in the wages and prices, they are staggered. They do not take place all at once. एक मैन्युफैक्चरर एक दफा एडजस्ट करता है प्राइसेस एंड वेजेस को, दूसरा उसके बाद कर सकते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी एक्सपीरियंस अ चेंज इन इन्फ्लेशन. तो ये दोनों इन्फ्लेशन परसिस्टेंस की जो रीजंस है, they give us a very good reason to assume that over a short period of time our inflation is stable. With the stable inflation, if we take the inflation on the y-axis and we take the output on the x-axis, we get a horizontal short-run aggregate supply curve. And then we said, what are the factors which can shift our short-run aggregate supply curve? There we talked about if suppose our inflation increases, inflation shocks. And now those inflation shocks we basically defined in terms of increase in production cost. When we say increase in production cost, we are talking about increase in raw material, increase in wages, increase in the cost of capital. So with the increase in the production cost, our short-run aggregate supply curve is going to shift upward. And we call it as a positive inflation shock. If the aggregate demand curve remains the same, the downward sloping curve, and we have a horizontal short-run aggregate supply curve, an upward shift in the curve will take it upward, and as a result, on the y-axis, we are going to have higher inflation and of course the lower output. So when our current output is low, and if we compare it with the potential output, then, and we also talked about the potential output in some of our previous lectures, कि ये वो output है जिसपे हम ये assume करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के सारे resources जो हैं वो optimally utilize हो रहे हैं. And that is the maximum output which we can get out of utilization of all the productive resources. So what we get out of this scenario is an upward shift in the short-run aggregate supply curve will increase inflation, and of course, we will experience a decline in the current output. Try to remember, we also talked about the expansionary and the contractionary gap, output gaps. So when our current output is less than the potential output, we have a contractionary gap. The contractionary gap is going to put a downward pressure on inflation.
As a result, our short-run aggregate supply curve will be shifting back. And the reverse is true for our scenario when we are talking about a negative inflation shock. अब ये तो था हमारा अब तक की डिस्कशन. On the supply side, we talked about the short-run aggregate supply curve, its location or its shape. In the short run, we said will be horizontal. And then some of the factors which can shift our aggregate supply curve. Now we would like to discuss the long-run aggregate supply curve. Now our long-run aggregate supply curve basically is focusing over a longer period of time. And when we talk about the longer period of time, we basically say the equilibrium or the long-run equilibrium with two characteristics. Number one, our current output will be equal to our potential output. And we can also say simply there won't be any expansionary or contractionary output gaps. Number two, our inflation, current inflation should be equal to the potential or the target inflation, not the potential inflation, rather the target inflation. और वो target inflation जो है, that is given by the or that is determined by the policy makers. So if we have this scenario and if current output is equal to the potential output, then what will be the shape of our long-run aggregate supply curve? We are going to have a vertical long-run aggregate supply curve, and we have reflected that on this particular slide. The long-run and short-run aggregate supply curves. The long-run aggregate supply curve is vertical at the point where current output equals the potential output. So what we have taken in this graph is the output on the x-axis and the inflation on y-axis. As per our previous discussion, our short-run aggregate supply curve is horizontal at the level of the current inflation. But when we talk about the long-run aggregate supply curve, going back to the graph here, the long-run aggregate supply curve is vertical at a point where our current output is equal to the potential output. Now let's talk about certain changes and the impact on the long-run aggregate supply curve. So changes in expected inflation operate like cost shocks, shifting the short-run aggregate supply curve up and down. जैसे कि अभी हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे शॉर्ट-रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, कि हमारे जो इन्फ्लेशन शॉक्स हैं और उनको हमने डिफाइन किया था एज इफ प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ जानी या कम हो जानी, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बढ़ जाने से हमने ये कहा कि हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा, कम होने से वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा. अब हम बात करना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है दैट ऑफ कोर्स एक्सप्लेन्स पार्ट ऑफ द करंट इन्फ्लेशन, दे आर इंटरलिंक्ड. अगर हम ये कहते हैं कि इन द नियर फ्यूचर हमारी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आज ही हम उसके बारे में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और हमारी करंट इन्फ्लेशन जो है बेस्ड ऑन द इंक्रीज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी. अब इसको हमने अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करना हो अपने एनालिसिस ऑफ शिफ्टिंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि चेंजेस इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन दे बिहेव लाइक द इन्फ्लेशन शॉक्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिनकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा. अगर हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम होती है तो क्या होगा कि हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट
downward. For the economy to remain in the long run equilibrium, then in addition to the current output equaling potential output, current inflation must equal the expected inflation. अब इसी फिनोमिना को लेके अब हम अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, प्रीवियसली वी सेड कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारी पोटेंशियल आउटपुट शुड बी इक्वल टू द करंट आउटपुट. ओवर एंड अबव अब हम क्या कह रहे हैं कि इन एडिशन टू द करंट आउटपुट which should be equal to the potential output, in the long run equilibrium our expected inflation and current inflation both should be equal to each other. Then at any point along the long run aggregate supply curve, current output equals the potential output and the current inflation equals the expected inflation. So that defines our long run equilibrium, and that is why our long run aggregate supply curve is vertical at a point where we have current output equal to the potential output. Now the question arises, will this long run aggregate supply curve remain at that point forever? The answer is no. There is always a possibility of increase in the potential output as well. How that can happen? That if our productive resources they increase, number one. Number two, if the productivity of these resources that increases, both of these will result in shifting our long run aggregate supply curve to the right. But if our productive resources they decline, meaning labor, mineral and the other resources, then what is going to happen? Our long run aggregate supply curve can even shift to the left. So we can say if we keep on adding into our resources, meaning thereby if we make more and more investments, our capital resource will increase, capital accumulation. And as a result क्या होगा? हमारा long run aggregate supply curve will shift to the right. Then there is another scenario, innovation, improved technology, improved productivity will again result in shifting the long run aggregate supply curve to the right. So potential output is constantly rising as a result of investment and technological improvement. Both are sources of the economic growth which increase the normal output level. Changes in the economy's productive capacity will shift the long run aggregate supply curve. Increase will shift it right and the decrease will shift it to the left. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को भी अप एंड डाउन शिफ्टिंग होती है इन्फ्लेशन शॉक्स की वजह से, फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइस इंक्रीज की वजह से और डिक्रीज की वजह से. सिमिलरली हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन आल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट एज वेल एज द राइट. नाउ लेट्स कंबाइन ऑल ऑफ दिस टुगेदर कि हमारी सप्लाई साइड along with the demand side, and let's talk about the equilibrium. Because in the beginning of this discussion we said कि अब हम सप्लाई साइड को लेके आ रहे हैं बीच में डिमांड साइड के साथ, and the objective here is to talk about the determination of equilibrium, level of output and inflation. So let's talk about the short run equilibrium first and then we'll discuss the long run equilibrium. अब हमारा जो short run equilibrium है, definitely that will be based on the intersection of the short run aggregate supply curve with the aggregate demand curve. So the short run equilibrium is determined by the intersection of the aggregate demand curve with the short run aggregate supply curve. And graphically अगर हमने इसको दिखाना हो, previously we said कि हमारा जो aggregate demand curve है, अगर हम inflation लें on y axis, output लें on x axis, is going to be a downward sloping curve. और इन्हीं dimensions के अंदर
inflation on the y-axis and the output on the x-axis, we said हमारा जो short run aggregate supply curve है वो horizontal होगा. So let's look at this with the help of the graph. Short run equilibrium of output and inflation. Inflation and actual output are determined by the intersection of the short run aggregate supply curve with the aggregate demand curve. So we see here inflation has been taken on the y-axis, output is reflected on the x-axis. We have a horizontal short run aggregate supply curve along with our downward sloping aggregate demand curve. So the arrow is pointing to the short run equilibrium where the short run aggregate supply curve and the aggregate demand curve are intersecting. So we get the actual output and the current inflation. So in the short run, we are basically talking about the determination of the current inflation and the current output. And now we are talking about the adjustments. Adjustment to the long run equilibrium. Now the short run equilibrium gives us the determination or the level of current inflation and the current output. Now when we compare our current output with the potential output, we can talk about the expansionary gap or the contractionary output gaps. So how the adjustment takes place? So when the current output exceeds the potential output, the resulting expansionary gap exerts upward pressure on inflation, shifting the short run aggregate supply curve upward, a process that continues until output returns to potential. At this point, inflation stops changing. Very simply, what are we trying to say? We are saying in the short run, our short run aggregate supply curve along with the aggregate demand curve determines the current level of output and inflation. There is a possibility that our current output can be above or below the potential output. So if our current output is higher than the potential output, we get a expansionary gap. Whenever we have the expansionary gap, then what do we get? An upward pressure on inflation. और उसमें हमने ये देखा था कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट शिफ्ट्स अपवर्ड, एंड दिस वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस ग्राफ. वी हैव एट पॉइंट नंबर 1 short run equilibrium as determined by the short run aggregate supply curve and the aggregate demand curve, current output and the current inflation. But when we compare our current output with the potential output, our current output is higher than the potential output. We have the expansionary gap. Expansionary gap basically results in an increase in inflation. और इन्फ्लेशन के बढ़ने से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करता है अपवर्ड. सो वी हैव एन अपवर्ड शिफ्ट इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. सो वी मूव आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2. So temporarily what we have is increase in current inflation, moving from point number 1 to 2. If the current output is lower than the potential output, the resulting recessionary gap places downward pressure on inflation, causing the short run aggregate supply curve to shift downward, and once again the process continues until the current output returns to the potential. It's just the reverse of what we have done for the expansionary gap. So that we have reflected here. We are starting with point number 1, the current inflation level with the current output level. Equilibrium is at point number 1. But when we compare our current output with the potential output, our current output is lower than the potential output. So we have a recessionary gap, and the recessionary gap is going to put a downward pressure on the short run aggregate supply curve. So that we have reflected here. So when the short run aggregate supply curve moves downward, we have a new equilibrium point at point number 2. Inflation keeps on decreasing till the point that our current output is equal to the potential output at point number 2. So this shows that the economy does indeed have a self-correcting mechanism, and that the manner in which
the short run aggregate supply curve shifts in response to output gaps reinforces our conclusion that the long run aggregate supply curve is vertical. That all of this discussion gives us one point, that shifts in the short run aggregate supply curve brings the economy back into the equilibrium where the current output is equal to the potential output. And this adjustment mechanism reinforces our previous conclusion that the long run aggregate supply curve is vertical at the point where our current output is equal to the potential output. Now we would like to look at the impact of shifts in aggregate demand curve on equilibrium level of output and inflation. इस सिलसिले में we said कि suppose aggregate demand shifted right as a result of an increase in government purchase. दोबारा याद करें कि जब हम बात कर रहे थे कि what are the factors which can shift the aggregate demand curve, and we said कि aggregate demand curve को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी है जो कि इंटरेस्ट सेंसिटिव है, कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व, और एक है जो कि इंटरेस्ट इनसेंसिटिव है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से उस पर ज्यादा असर नहीं होता. तो उसमें हमने एग्जांपल ली थी कि गवर्नमेंट परचेसेस, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन माइंड and they would like to spend money on their development and the non-development projects. And they are not going to change those targets by much because of the change in the interest rates. Similarly, taxes are also not sensitive to the interest. तो ये जो component हैं जो interest insensitive हैं, उनके बढ़ने से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और उनके कम होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टू द लेफ्ट. जो हमारे इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट है उनकी वजह से विल मूव अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व बिकॉज इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, बट द शिफ्ट इन द कर्व इज ड्यू टू द चेंज इन द interest insensitive component of aggregate demand curve. So here we have taken, for example, increase in government purchases. So at first क्या होगा? Current output rises, but inflation does not change. So we are talking about a scenario in which we have horizontal short-run aggregate supply curve, aggregate demand curve shift to the right because of increase in government purchases. We remain on the same inflation rate, but we experience an increase in our output, but that is the first impact of increase in the government purchases. But the higher level of output creates an expansionary gap, and the short-run aggregate supply curves start to shift upward and inflation rises. And this we have reflected on this graph. The impact of a shift in aggregate demand on output and inflation. Short-run equilibrium inflation and output following an increase in aggregate demand. अब हमारी जो aggregate demand curve है अगर वो shift करता है, we move from one point to another point. हमारा old जो है aggregate demand curve is giving us equilibrium at point number 1 where the current output is equal to the potential output. Government expenditure के बढ़ने से हमारा aggregate demand curve जो है that moves to the new aggregate demand curve. No other change takes place, and as a result क्या होता है कि हमारे पास उसी इन्फ्लेशन लेवल के साथ आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है. अब आउटपुट के बढ़ने से जो हमारी करंट आउटपुट है अगर वो पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे पास एक एक्सपेंशनरी गैप आ जाता है. इसको मजीद एलैबोरेट करने के लिए वी हैव समराइज्ड इट ऑन दिस स्लाइड. एट पॉइंट नंबर 1 we start at long run equilibrium where current output is equal to the potential output, current inflation is equal to the target inflation. Point number 2 पे क्या है? Aggregate demand shifts right. हमारा original aggregate demand curve shifts to the new aggregate demand curve.
As a result, हमारी current output is higher than the potential output and inflation remains unchanged. Short run equilibrium moves from point number 1 to point number 2. But what is there on point number 2? We have an expansionary gap. Now the higher inflation moves policymaker along their reaction curve, leading them to raise the real interest rate and moving the economy upward along the new aggregate demand curve. बेसिकली क्या हो रहा है कि पॉइंट नंबर 1 से जब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, हमारा इन्फ्लेशन सेम है, बट एक्सपेंशनरी गैप की वजह से हमारी अब इन्फ्लेशन पे प्रेशर होगा अपवर्ड. और जब हमारा इन्फ्लेशन पे अपवर्ड प्रेशर आता है तो हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है विल मूव अपवर्ड. और उसकी वजह से क्या होगा कि हायर इन्फ्लेशन टारगेट के साथ साथ हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्फ्लेशन के साथ साथ, रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी इन्फ्लेशन के साथ साथ. और अब जो हमारे इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट है आउटपुट के वो डिक्लाइन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड के जो इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट है, एंड वी विल एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन द आउटपुट एंड वी विल बी बैक टू द long run equilibrium output level where the current output is equal to the potential output. So output then begins to fall back towards this long run equilibrium level. The economy will settle at the point at which the new aggregate demand curve crosses the long run aggregate supply curve at current output again equals the potential output. And this we have reflected on this particular graph. कि अब हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 पे हम किस तरह मूव हो रहे हैं. कि पॉइंट नंबर 2 इज अ पॉइंट वेयर आवर करंट आउटपुट इज हायर देन द पोटेंशियल आउटपुट एंड वी हैव एन एक्सपेंशनरी गैप. एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन बढ़ेगी, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड. देयर इज अ प्रेशर फॉर द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू मूव अपवर्ड. तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाती है और इन्फ्लेशन के बढ़ने के हम क्या करते हैं, अब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है. और हमने ये कहा था कि रियल इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से जो इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड कर्व के वो चेंज होते हैं, लेकिन उनकी चेंज जो है वो इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम एग्रीगेट डिमांड कर्व. इसलिए वी हैव प्लॉटेड द एरोज मूविंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 टू द पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज गोइंग टू सेटल डाउन एट पॉइंट नंबर 3 वेयर we have long run aggregate supply curve equal to the aggregate demand curve and our current output is equal to the potential output and we are back into the long run equilibrium scenario. So adjustment में हम क्या कह रहे हैं, at the short run equilibrium point 2 current output is greater than the potential output. Short run aggregate supply curve begins to shift up, output begins to fall, inflation begins to rise as economy moves along the new aggregate demand curve. With no policy response, economy moves to the point where current inflation is higher than the target inflation. Now, if the central bank simply sit back and look at it, does not do anything, then what is going to happen? If the central bankers simply sit and watch as the aggregate demand curve shifts to the right, inflation will rise. So long as the monetary policy makers remain committed to their original inflation target, they will need to do something to get the economy back to the point where it begins, that is at point number 1. अब उसके लिए क्या है कि अगर तो monetary policy makers जो हैं they do not react, equilibrium settles down at point number 3. Point number 3 पे current output is equal to the potential output, but the inflation can be higher than the potential inflation rate. If the monetary policy makers they react to that, and we are going to discuss that, उस reaction में भी हमने बात की थी reaction curve की, monetary policy reaction curve की, जिसमें हमने कहा था कि aggressive भी हो सकती है reaction और पैसिव भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है. एग्रेसिव में तो हमने कहा था हमारे पास फ्लैट होगा रिएक्शन कर्व और स्लोनेस में हमने कहा था कि स्टीप होगा रिएक्शन कर्व.
तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्लोप ऑफ द रिएक्शन कर्व. सो हियर an increase in the government purchases raises the long-term real interest rate. Policy makers will compensate by shifting their monetary policy reaction curve to the left, increasing the real interest rate at every level of inflation. कि अगर inflation बढ़ती है and they react to that by shifting their monetary policy reaction curve to the right, what is going to happen कि हमारे हर level of inflation के साथ रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा. रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हमारे इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट जो है वो इफेक्ट होंगे एंड एज अ रिजल्ट आउटपुट जो है वो डिक्रीज करेगी विद द लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. व्हेन द मॉनेटरी पॉलिसी रिएक्शन कर्व शिफ्ट्स, द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स विद इट. द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ब्रिंगिंग द इकोनॉमी बैक टू द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. अब जब हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है इन्फ्लेशन बढ़ी, रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, तो क्या हुआ? रिएक्शन कर्व अगर शिफ्ट करता है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट करेगा और वो शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल ब्रिंग द इकोनॉमी बैक इनटू इक्विलिब्रियम विद द सेम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड नो आउटपुट कैप. So an increase in aggregate demand causes a temporary increase in both output and inflation. And we can also say vice versa. A decrease in aggregate demand can cause a temporary decline in output and inflation. If the monetary policy makers they react to it, then what is going to happen? We will see the adjustment back to the long run equilibrium with no output gap and current inflation equal to the target inflation. This discussion implies that whenever we see a permanent increase in inflation, it must be the result of monetary policy. That is, if inflation goes up or down and remains at its new level, the only explanation is that central bankers must be allowing it to happen. अगर हम automatically economy को adjustment की तरफ छोड़ते हैं, तो temporarily it is quite possible that हमारी output और inflation दोनों change हो जाएं with the change in the aggregate demand. लेकिन अगर increase in inflation is a permanent increase, it stays there, then it means that the monetary policy makers are intentionally trying to achieve that level of inflation. They have changed their inflation target whether or not they acknowledge the change explicitly. कि ये automatically permanent change जो है in inflation that reflects the action of the monetary policy makers whether they acknowledge it or not. अब हम देखना चाहेंगे कि impact of inflation shocks on output and inflation. इससे पहले हमने देखा था impact of change in the aggregate demand on inflation and output. An inflation shock shift the short-run aggregate supply curve such as an oil price increase. जिससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे short-run aggregate supply curve की, तो हमने ये कहा था कि there are certain variables जिसकी वजह से हमारा short-run aggregate supply curve जो है वो upward and downward shift करता है. उनमें से एक था हमारा इन्फ्लेशन शॉक्स, और इन्फ्लेशन शॉक्स को हमने कहा था फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब वो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फॉर वट एवर रीजन. तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड. A positive shock moves it to a higher level and the result is higher inflation and lower output, a situation called the stagflation. अगर cost of production बढ़ जाए, aggregate demand curve remains downward sloping. तो क्या होगा कि upward shift करता है जब हमारा short run aggregate supply curve. तो हमारे पास सिनेरियो क्या डेवलप होता है कि आउटपुट जो है वो भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी.
इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इस सिनेरियो को कहते हैं स्टैगफ्लेशन. सो लेट्स लुक एट दिस. Impact of inflation shocks on output and inflation. A positive inflation shock shifts the short-run aggregate supply curve upward, moving short-run equilibrium from point number 1 to point number 2. Inflation rises and the output falls. What have we done here? We have taken the output on the x-axis and inflation on the y-axis. हमारे पास है downward sloping aggregate demand curve with old short run aggregate supply curve. Our equilibrium is at point number 1. At point number 1, we have our current output is equal to the potential output. And our current inflation is also equal to the target inflation, which means both inflation and the output levels are at long run equilibrium. So at point number 1, our current short run equilibrium is synonymous with the long run equilibrium. But when there comes an inflation shocks, a short run aggregate supply curve shifts upward. Now shifting of the short run aggregate supply curve upward shifts our equilibrium from point number 1 to point number 2. At point number 2, we have our current output less than the potential output, as well as our current inflation is higher than the target inflation. So what we have here is a situation which is known as stagflation, higher inflation with the lower output level. But the decline in output exerts downward pressure on inflation, causing the short-run aggregate supply curve to shift down. क्योंकि जब भी हमारे पास current output is less than the potential output, we have a recessionary gap. और उस रिसेशनरी गैप की वजह से क्या होता है, हमारी इन्फ्लेशन जो है स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. और जब हमारी इन्फ्लेशन कम होती है तो हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो दैट मूव्स डाउनवर्ड. सो देयर कम्स अ प्रेशर ऑन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू मूव डाउनवर्ड. सो इन्फ्लेशन फॉल्स एंड आउटपुट राइजेस until the economy returns to the point where current output equals potential output and inflation equals the central bank's target inflation. तो अब क्या होगा कि ये हमारी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहेगी. रिसेशनरी गैप की वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. इन्फ्लेशन के कम होने से इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और हमारी आउटपुट जो है वो एक्सपेंड करेगी. आउटपुट की एक्सपेंशन के साथ साथ हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई एंड देयर इज अ प्रेशर ऑन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू मूव डाउनवर्ड. And we will back to a scenario in which output increases and inflation decreases. So an inflation shock has no effect on the economy's long run equilibrium point. Only a change in potential output or a change in central bank's inflation target can accomplish that. To just summarize the impact of the inflation shock on the long run equilibrium, we can conclude कि हमारे पास अगर इकोनॉमी इज इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जहां पे पोटेंशियल आउटपुट इज इक्वल टू द करंट आउटपुट, और अदर आई शुड बी सेइंग कि हमारी जो करंट आउटपुट है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल आउटपुट. एट द सेम टाइम व्हेन आवर करंट इन्फ्लेशन इज इक्वल टू द टारगेट इन्फ्लेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक. अब इस सूरत हाल में अगर इन्फ्लेशन शॉक आता है, इन्फ्लेशन शॉक इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या होगा, हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड. जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है अपवर्ड, हमारा जो इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इट विल मूव from point number 1 to point number 2. But what is point number 2? The point number 2 is a point where हमारा नया short run aggregate supply curve intersects with the aggregate demand curve. और वो point number 2 is a point where हमारी current output is less than the potential output
and our current inflation is higher than the target inflation. अब क्या होगा? Because of the current output being less than the potential output, we have a recessionary gap. और recessionary gap जो है, that puts a downward pressure on inflation. और जब inflation पे downward pressure है, तो that is going to shift the short-run aggregate supply curve downward. तो जब हमारा short-run aggregate supply curve start shifting downward, तो we'll back to the long-run equilibrium, जहाँ पे हमारी potential output और current output they are equal to each other, और inflation भी कम होके there is a possibility कि it will come back to the target level which is set by the policy makers. So in conclusion we can say कि हमारे जो इन्फ्लेशन शॉक है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को तो इफेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन नॉट चेंज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. देयर इज अ टेंडेंसी इन द इकोनॉमी टू कम बैक टू द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. अब what are the scenarios in which or what are the factors which can influence our long run equilibrium? तो उसमें हमारे पास है सप्लाई शॉक्स. बेसिकली उनमें है इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाने की वजह से, रिसोर्सेज बढ़ जाने की वजह से हमारी जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वो जो है वो मूव कर सकता है, और उनके बारे में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू discuss in the next lecture. But before I conclude our today's lecture, I should be just reviewing कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर किए. पिछले ही लेक्चर से we started talking about the supply curves, but there we said कि हमारा supply curve जो है उसको हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं. एंड ये भी सेड कि हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा एट द करंट इन्फ्लेशन लेवल. अब उसमें देयर आर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन शॉक्स, दे कैन शिफ्ट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व along with the aggregate demand curve gives us the equilibrium level of current output and current inflation. And then we said कि what will be the shape of our long run equilibrium? Long run equilibrium में हमने ये कहा कि हमारी potential output और current output एक दूसरे के बराबर होती हैं और हमारी inflation जो है वो target inflation के बराबर होती है. तो इस सूरत हाल में हमारा जो long run aggregate supply कर्व है that will be vertical at the potential output level. अब इस लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को शिफ्ट करने के फैक्टर्स क्या हैं? उन फैक्टर्स में हमने बात की थी कि अगर हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिसोर्सेज बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, तो इस सारे की वजह से हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट टू द राइट. And decrease in all of these resources as well as the productivity of the resources can shift the long run aggregate supply curve to the left. अब हमारा long run aggregate supply curve along with the aggregate demand curve gives us an equilibrium level of output and inflation, जहाँ पे हमारे पास current output is equal to potential output and there is no output gap. और हमारी करंट इन्फ्लेशन इज इक्वल टू द टारगेट इन्फ्लेशन सेट बाय द पॉलिसी मेकर्स. एंड देन वी एनालाइज सम ऑफ द फैक्टर्स शिफ्टिंग द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड वी लुक्ड एट हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू गो बैक टू द इक्विलिब्रियम सिनेरियो. उसमें हमने एनालाइज किया कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन शॉक्स आते हैं,
और उसकी वजह से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट करता है अपवर्ड, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और साथ साथ हमारी आउटपुट भी कम हो जाएगी, करंट आउटपुट। तो जब हमारी करंट आउटपुट जो है वो कम हो जाती है तो वी हैव अ रिसेशनरी गैप, और उस रिसेशनरी गैप की वजह से देयर विल बी अ प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन टू गो डाउन। और इन्फ्लेशन जो है जब वो कम होती है तो रियल इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड दे आर इन्फ्लुएंस्ड एंड एज अ रिजल्ट हमारी आउटपुट जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी। एंड देन वी एनालाइज कि अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस, तो फिर क्या सूरत हाल होगी और हाउ वी आर गोइंग टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम। इस सारी डिस्कशन के बाद वी कंक्लूडेड वन थिंग कि हमारे जो इन्फ्लेशन शॉक्स हैं उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी टेम्परेरीली कैन मूव अवे from the equilibrium, but it will come back to the long run equilibrium. Overall, हमारी potential output and current output will remain at the same level, but there are certain variables which can shift our long run aggregate supply curve and therefore our long run equilibrium level of output and inflation. And inshallah we are going to talk about those variables in the next lecture. तो आज के लिए डॉक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।